Students, we have discussed the abstract noun, its definition, and with some examples. Now we are heading towards our next grammatical topic, and that is preposition of time. Students, before moving towards the preposition of time specifically, let's define the word preposition. A preposition is a word used to link noun, pronouns or phrases to other words within a sentence. यानी कि एक preposition एक ऐसा word है जो noun, pronoun और other phrases को एक sentence में आपस में connect करता है. यानी कि ये एक sentence को logic provide करता है with the help of these prepositional words. They act to connect the people's, objects, time and location of a sentence. Preposition are usually short words. ये छोटे अल्फाज होते हैं as they are normally placed directly in front of nouns, but in some cases you will find preposition in front of gerunds as well. Students, let's see कि book में हमें कौन-कौन से preposition of time दिए हुए हैं. पहला preposition of time है in. Students, when we in हमारे in के कितने uses हैं, ये हमारा uses है, ये example है. जब हम किसी भी sentence में months को introduce करते हैं तो हम लोग in use करते हैं. For example, in June, in September. As well as हम किसी भी sentence में years को introduce कर रहे हैं. We can always use we always use in as a preposition. For example, in 2011 or in 1990. If we want to introduce season, हम जब seasons की बात कर रहे होते हैं किसी भी sentence में तो तब भी हम preposition in use करते हैं. For example, in winter, in the summer of 2011. किसी भी दिन के किसी भी हिस्से को, for example, in the morning, in the evening, afternoon and in the evening we can say. For example, if we want to share the duration of something like in a second, in 2 days. Next preposition is at. At को हम कुछ किन uses में, for example, if we want to introduce a part of any day, for example, at night, at afternoon, at midnight, time of the day, at 8 o'clock, at midnight. Time means यहाँ पे ये एक specific time था जब यहाँ पे 8 o'clock उसमें हम लोगों ने दिया हुआ है तो हम उसको रेफर करने के लिए हमेशा at use करेंगे. Then we have some specific celebration like at Eid, at Hajj. Then when we want to express fixed phrases at the same time. Next is on. On को हम days of weeks को represent करने के लिए use करते हैं. For example, on Sunday, on Friday. डेट्स को भी मेंशन करने के लिए हम हमेशा ऑन यूज़ करते हैं. ऑन द 20th of August या स्पेशल हॉलीडेज को मेंशन करने के लिए किसी भी सेंटेंस में हमेशा हम ऑन यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इन तीन प्रपोजिशंस को किन किन डिफरेंट यूजेस में इस्तेमाल किया और इनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रपोजिशन. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 4, हजरत अस्मा. माय नेम इज सरदार हमजा. आई एम योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk. आई होप you understand each and everything related to this chapter. Let's see you in the next video.